On behalf of Bhikaji Kama, Subharti College of Hotel Management, a constituent college of Swami Vivekanand Subharti University, feel privileged to welcome you all for the 7th International Conference ATITHI-2022. Good morning all. I, Indranil Bose, also welcome one and all to this state-of-the-art Mars Resort. This marvelous resort encompasses 72 luxurious rooms, spa, gymnasium, salon, beautiful swimming pool, all-day dining restaurant, huge banquet halls, terrace garden, bar, food court, and a well-designed meeting hall, Mantrana, where we all are gathered today. So a big round of applause for the Mars Resort. As we all know that prayer is the most powerful tool the mankind has, so before we start with our day, we first pray to God to attain strength and inner peace. With this, I call upon our students to present Saraswati Vandana, and I request Dr. Shiv Mohan and all the dignitaries to step forward to light the lamp. Thank you. Now I would like to take this opportunity to invite our guest for today's function with a request to come up on the stage and kindly occupy the distinguished seat on the stage. First, I would like to request Chef Jatinder Uppal on the stage on behalf of Subharti Bhikaji Kama College of Hotel Management. Please, Dr. G.K. Thapliyal sir, to please come up on the stage. I humbly invite our guest of honor, Professor Lavkush Mishra ji, to occupy his seat on the stage. Please, sir. I am glad to invite Dr. Sandeep Walia to occupy his seat on the stage. Thank you, sir. I request Dr. Riaz Qureshi, sir, to please come up on the stage and occupy the seat. I request Dr. Jatashankar Tiwari, sir, to please come up on the stage and occupy the seat. Thank you, sir. It is our culture and custom in Subharti to welcome our guest with a sapling to show our love and gratitude. So for this, I would like to request Dr. Shiv Mohan Verma to present a sapling as token of love and gratitude to our chief guest, Chef Jatinder Uppal sir, F&B analyst at Stark Hotel. We feel honored, sir, for your gracious presence among us. Now, I would like to request Dr. Dhananjay Srivastav sir to present a sapling to our guest of honor, Dr. Lavkush Mishra sir from Agra University. Thank you, sir, for your presence. I would like to request Dr. Shiv Mohan Verma to kindly welcome our Honorable VC sir with a sapling as a token of love and gratitude. Thank you so much, sir, for your presence. I would like to request Dr. Dhananjay Srivastav sir to present a sapling to Dr. Sandeep Walia from LPU University as a token of love and gratitude. Thank you so much, sir, for coming. I would like to request Dr. Dhananjay sir to present a sapling to our keynote speaker, Dr. Riaz Qureshi sir from University of Kashmir. Thank you so much, sir, for coming. I would like to request Dr. Shiv Mohan sir to present a sapling to Dr. Jatashankar Tiwari sir from IGNOU University. Thank you, sir, for your presence. I would like to request Dr. Shiv Mohan sir to present a sapling to us, sir, Dr. Amit Kumar Singh from Sikkim University. Thank you, sir, for your presence.
Thank you all for joining us today. Gave a brief introduction about Dr. Shimohan Verma. He has been associated with Bikaji Kama Subharti College of Hotel Management, Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, since 2014 as a head of institute. His specialization is in the area of food production, human resource management, and hospitality marketing management. He has 3 edited books to his credit. Dr. Verma has been an active researcher, having presented his work in conferences and published more than 15 research papers on tourism and hospitality in domestic and international journals, and also contributed to several book chapters. He has chaired the dissertation committees of several doctoral candidates. He has been a resource person for various conferences and seminars. He has been awarded Sarvapalli Radhakrishnan Award by Mr. GVG Krishnamurthy in the year 2013. He has been awarded IHC Educator Award for outstanding contribution in the field of hospitality education by Indian Hospitality Congress Awards 2016. I request Dr. Shimohan Verma to welcome our dignitaries, keynote speakers, delegates, and students. Please, sir. Jai Hind. It is pleasure for me to welcome all delegates and participants in 7th International Conference ATITHI-2022. We are continuously organizing conferences in last 7 years, and thanks to our management, they are giving support us. I cordially welcome to our chief guest, Chef Jitendra Uppal sir, guest of honor, Professor Lavkush Mishra sir, all keynote speakers, all participants who has accepted our invitation and come from the far distance to join us. I also welcome to our Honorable Vice Chancellor sir, Major General G.K. Thapyal sir, and who is precious presence to amplify the glory of this event. I also welcome all faculty members, non-teaching staff, dear students who are present here in this 7th International Conference. Our institution from last 7 years continuously organizing international conference on the theme of advanced technologies and innovations in tourism and hospitality industry, so that tourism and hospitality academia and industry can come together on a single platform and get opportunity to discuss, explore new emerging issues and challenges in hospitality sector, and they can get possible outcomes to cope up with. I would also like to thank our hospitality partner, the Mars Resort, for providing this venue for our conference. So I'm not taking so much time. Once again, congratulate all and welcome all dignitaries in this 7th International Conference, which are organized by the Bikaji Kama Subharti College of Hotel Management. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. And good morning to you all. At the outset, on behalf of Swami Vivekananda Subharti University, I extend a warm welcome to our chief guest and all dignitaries sitting on the dais, participants, and my dear students. I'm glad to be here on this day of inauguration in this beautiful environment of our newly commissioned resort, and Hotel Management College has been the first one to organize the conference here. I congratulate you for that and thank you. So this international conference, which is being organized by the College of Hotel Management, is I think how many international conferences? This is the 7th. This is the 7th. It's a good number, and participants from all over India are there present here, and I'm sure this conference is going to benefit all those who are in the hospitality system. And the theme of this conference is Atithi. Atithi जो हमारा एक कल्चर है, जो हमारी ईथॉस है, इंडियन ईथॉस, इंडियन कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशन है,
वो अतिथि उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। जिस तरह से हम अपने ग्रेजुएट्स को तैयार करते हैं एक अतिथि का सम्मान के लिए या अतिथि को रिसीव करने के लिए, उस ग्रेजुएट्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि एक अतिथि के सम्मान के लिए, वो हम सबको मिल जाता हमारे पुराने कल्चर से, पुराने ईथॉस से, इंडियन कल्चर और इंडियन ईथॉस से। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी a good synergy between the old Indian ethos and the modern traditions. So all deliberations, I'm sure, will help our students to achieve that goal. With those words, I have to go. I have to leave early. I'm so sorry for that, not being here with you throughout this conference. But I will be getting the information. I'll receive how it is going on and what kind of outcome of this conference will have. That later on principal sir will tell me all this. Thank you very much once again and wish you all the best. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में, ये कॉन्फ्रेंस बहुत सक्सेसफुल हो और इसका आउटकम डिजायर्ड हो, हमारी जो हम चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। It would not be called research, would it? So, it is on occasion like this we get opportunities to test our knowledge and understanding. We look forward to get an exposure about what the best of the brains think about the dynamic issues. Moving forward, now I profusely elated to take an opportunity to introduce our chief guest, Chef Jatinder Uppal. He is the Director, Passion Foods, F&B Analyst at Stark Hospitality, Consulting Partner at Trans Hotels. He has continuous experience of 40 years in the profession. Started his career in 1975 from Taj Mahal Hotel, Bombay. He has worked in India, Malaysia, Singapore, London, Paris, Australia, and has also worked with Michelin star chefs. He has been declared as 100 all-time Grand Master Chefs in India by ICF, Indian Culinary Forum. He was the executive chef for the Commonwealth Games 2010 Athletes Village, catering to 40,000 meals per day for athletes and staff. He was also an executive chef at Taj Sats Air Catering Business, Delhi, catering to 20,000 airline meals and 8,000 meals for institutional catering to MNCs. I wholeheartedly welcome you, sir. Please enlighten us with your valuable words. Please, sir. A big round of applause, sir. Of Bikaji Kama, Subharti College of Hotel Management, Dr. Shiv Mohan, who's been kind enough to invite us here. All the dignitaries on the dais and off the dais, students and colleagues who all are here. It gives me immense pleasure and I am honored to be here as a chief guest on the 7th International Conference on Advanced Technology and Innovations in Tourism and Hospitality Industry. I've been in the industry for 40 years and trends have changed to new technologies and new innovations have come in. Keeping all the latest technologies and trends is essential because the industry itself is extremely competitive and those who fail to adapt such changes will find themselves being left behind. The current trend in hospitality and industry suggests that the industry is looking to a shift of focus to new methods and technologies to satisfy customers' ever-growing curiosity and choice. Personalized digital content at the tip of the fingertips. Mobile interfaces and new aspects of computing and devices such as tablets, smartphones, and artificial intelligence are revolutionizing the way we interact with technology. The hotels of today are moving towards being 100% digitally enabled. They are being powered by AI. Mobile software, cloud computing and other tools and applications. Hotels are moving forward to away from the traditional chunky keys being given to the customer to RFID keys. RFIDs now radio frequency identification keys. So they can collect the data, they can store the data and they can tell the management what is happening. So it reduces human error and gives you a better result. The leisure industry is one of the driving forces in the global economy. Tourism is recognized as an industry in which food and all is not
still taken as an industry, but it plays a major part. A tourist who comes to India does not only come to see sights, he is here to have a comfortable stay and to enjoy the cuisines what we have to offer in all the states of India. Each state in India has a different cuisine, and every state's cuisine has something in particular which is very, very important for the state. A tourist who comes in here has to have a meal every 2-3 hours, and their experience of our cuisine in whichever region they go is very important for us. That they feel comfortable, they feel delighted to see the sights, and they enjoy our cuisine. That is one part of their visit which they want to enjoy. Indian food has evolved a lot. We used to first cook on charcoal and wood. Now the trends have changed, technology has changed, and new innovations have come in. Previously we used to make biryani in pots and put it on charcoal. Charcoal was at the base and charcoal was on top of the pot as well. Now with innovations and things coming on and we going more eco-green, charcoal is being discouraged. So now the biryani which was being made in the traditional way has moved to the oven, which gives nearly the same results. Might not be the same flavor, but it is still there. So we also have to change with the technology and new innovations which are coming up. Combi oven has made an oven in which all the recipes of the dishes are fed. You just have to press the button and that will give you the exact recipe and the cooking procedure and the time which is required to cook the dish. Indian food still hasn't reached that. They've done all this for continental food and the food which is more European. Indian food, we still need to work on it and develop some more technology and innovations so that we can focus more on Indian food and see that we also reach that level. None of our recipes here in India are standardized. There's no book which standardizes one recipe. Our cuisine is so vast that French cuisine only has like 5 other sauces which are standardized. India, you move from 200 kilometers along the coast and the cuisine changes. So to standardize those, I think Tourism Ministry has started compiling all those recipes. Hopefully they should be there. There might not be a standardized recipe for one dish, but the basics are there. Fusion cuisine has now started all over the world and mainly in India. Fusion cuisine to a certain level is good, it can help, but getting away from the basics of the recipe or the authentic recipe is not the correct way. Some innovation and some fusion in a dish is acceptable, but if you totally move away from the traditional recipe of a dish, I think it is going to spoil the fabric of the dish. So innovations, we still need to go. Technology, we have to move. Previously, we all were cutting vegetables by hand. Now all that is changed. We are using now machines and mechanical equipment are being used for convenience, for a better result, and to save manpower. Bulk production is not easy if you are doing it by hand. You need to have mechanized things, so you need innovation and you need technology to help you along the way to produce. Some of our industries who are producing foods and snacks in bulk, they have gone for that mechanized thing and they have standardized their particular dish. They haven't standardized the recipe, they've standardized the dish according to their taste. That this is the one which you are going to sell in the market. So those standardizations are for those companies who are producing in bulk. If you go to a restaurant, a particular person cooking food has his own taste. There's no standardized formula that this spice is going to go and it's going to taste. If you go to Kashmir, it's different. If you come down to Delhi, the food being cooked in Delhi might not be as authentic as what is done in Kashmir. Or
if you go to the south, what you get in south and in Delhi is totally different. If your South Indian comes here and he has something here, he says, oh, this is totally out. Same as with Kashmiri food, gushtaba, rishta and all. The meat has to be hot when it is pounded. If you bring in meat which is there for 6-8 hours, I don't think they'll accept it. So those are the technical things. So they have to have some innovation which will give them a clearer picture and hands up to the technology which is being used. Technology in India, I think some of the dishes which Indians have done, tea started from China, tea making. Then the Britishers came in, they added milk and they gave us a different type of tea, which some of us take. But according to the Indian tea, the Indian masala tea, what the Britishers and what they were having has a high content of caffeine, which makes it acidic. Indian masala tea, after adding cinnamon, cardamom, ginger in that, cuts down the acidity and makes it alkaline. Cinnamon is the most alkaline spice which we have. So such innovations, Indian tea is now a balanced tea. If you have it, you don't get acidity. So such things which are there in Indian food is one of the best balanced foods anywhere in the world you can get. If you go for Italian food, they use loads of tomatoes, which create acidity. They can do it because they drink lots of wine and cheese and everything to balance it. Indian food has so many spices and ingredients in that it's supposed to be the best balanced meal. So all the students who are here, I think for them, it is a good opportunity. I would like to advise them that if you want to move on with the hospitality sector, you have to embrace technology and innovations and move forward in a good way. You've chosen a good line. I think you all will do well because this is one of the sought after industries. And getting a job in the hospitality industry is not difficult. It's easy as long as you're going to work hard. So don't give up your hopes, keep it up, and I think you will do all will do well. At the end, I would like to say to the students, they had chosen an interesting and exciting career which is involving to realize their potential and make the institute and your parents and your country proud. Thanking all of you who are involved in that. Thanks, Subharti. Jai Hind. He is presently working as an associate professor and head of the department in the field of hospital management at Professional University, Jalandhar, Punjab. His area of interest are community-based tourism, tourism marketing. He has authored 8 books with various international publishers and 18 research papers in various international journals. He has recently published Handbook of Community-Based Tourism Management with Ruth Ledge, Attila and Francis Group. His forthcoming book titled Millennials and Spirituality, Globally Rising Publicities with Ruth Ledge is in process. I humbly request sir to share his views with us. Please sir, a big round of applause. Good morning to one and all present over here. I hope I am audible to the people who are sitting at the last. Okay. So good morning to all. Good morning. So at the outset, I would like to thank the organizer of this 7th international conference titled Advanced Technologies and Innovation in Tourism and Hospitality Industry, ATITHI-2022, and particularly to the University, College and Dr. Shiv Mohan for giving me an opportunity to interact with the budding professionals who are supposed to join this dynamic industry. With the permission of the chief guest of the day and the dignitaries present on the dais of the dais, I was supposed to talk on the artificial intelligence and this advanced technologies, innovation in tourism and hospitality. But Dr. Shiv Mohan also wanted me to talk about research that I'll be taking in the second part. So starting with this advanced technology in tourism and hospitality industry. You know, my dear students, across the globe, there are buzzwords for technology integration, metaverse, virtual reality, artificial reality, artificial reality, Internet of the Things. People across the globe, not only we in this part of the globe, in our country are talking about this, but entire globe is talking about and implementing such initiatives, innovations. You know, once very beautifully said by the great scientist Albert Einstein,
that the true sign of intelligence is not knowledge but imagination. And moving forward from imagination to innovation, we may say that this innovation is the constant creation of ideas and solutions that translate into monetizable products, services, or the business practices. And what can be the innovation in tourism and hospitality? Now we are standing on the verge of Industry 4.0, Innovation 4.0. We are living in that era, particularly if I talk about you people, you are the natives of the generation Z. That generation Z, which is believed to be more or most tech savvy generations out of the irrespective of the X and the Y generations. So what are the innovations to the generation X and Y, which we say these things are the innovation in the industry? You people were born with the things which were embedded inside your smartphone. And they may not seem innovations, they may not seem technology integration to you people, because you have started with the smartphones, we have started with Nokia. Right? So what can be the innovations? What can be the value creation? We have seen that almost, I take liberty to use this word, that almost every person nowadays is having the best smartphone in their pocket. And this penetration of the smartphones in the market have increased the technological disruptions and the use of the digital gateways, payments, and this has actually changed the industry at large. So how this digital transformation has transformed tourism and hospitality industry? We may take any case. We may take the case of the hotels. Check-ins, they have made very hassle-free. We may take the example of airports. Same technologies. Artificial intelligence, they can scan you while walking on the ramp. Online travel agencies. Once you book a ticket, once you book a hotel, next time you will find that they have started chasing you. They have started chasing your interest. Would you like to have a garden view room, or you would like to have a sea view? Which room? Premium, economy, superior? Which room you prefer? Which room you stayed last time? The Google knows everything. And the irony of the situation is that this Google has just turned 37 last year. But this Google knows everything about you, about your choice preferences, what you like, what you dislike. And based on these preferences, based upon the your wish list which you have created for the last booking, they tend to automatically refill the things and the interest which you are having. We talk about the in-flight entertainment system. Nowadays you can get easily Wi-Fi in the flights. You can watch your favorite movies. See how the way technology has integrated. Then this tourism and hospitality, particularly digitalizing our journeys. This has increased the passenger's experience with augmented reality and the virtual reality. I talked about the security check-ins with the help of artificial intelligence at the airports. Internet of the Things for the improved airport experience nowadays. Passenger assistance with robotics in the hotel, Japan started. And then they started a lot of, discussions that whether the robotics should be there in the hospitality industry or not. And people had different opinions. Some supported, some were not in the support. Personally, I am also not in the support. A robot is programmed to deliver a water bottle to my room. But if I ask, Jenny, can you give me a pill? I am having a headache. Might not be programmed for that. A lot of discussions, innovations are still going on. University of South Florida, people are working in digitalization of this hospitality industry. They are the pioneers in that. Then, what are the trends which have been evolved in 2022? We might have seen that with the advent of the COVID, travel bubble, a trip to nowhere,
and this metaverse, a buzzword have started there. You might have seen people in the shopping malls having some different types of glasses on there and doing some activities. What are they actually doing? They are experiencing metaverse. And this metaverse technology can tell you about this entire Mars resort by standing outside somewhere if you program it for that. Now, what is 4.0? We have witnessed Industry 2.0, particularly not in India, but in the West, 3.0 is already going to exhaust and they are standing on the verge of 4.0. But we here in India are still to experience 3.0, technology 3.0, industry 3.0 in tourism and hospitality industry. And this is an initiative to unlock the innovation potential by enabling collaboration between all stakeholders of the smart tourism and hospitality ecosystem to co-create enriched experience with the help of key enabling technologies from industry. You have best artificial intelligence, blockchain technologies, emerging technological solution, wireless connectivity, big data, cloud computing, you name anything, Internet of the Things. These are just on the verge on your fingertips. We have the payment gateways. We were using PayPal, Google Pay, Facebook Messenger, WhatsApp. Now, these travel websites like Google Flights have come up. Priceless, Expedia, they have already started doing things. They can autofill your preferences. And then this metaverse, this has completely changed the entire scenario. You need not to enter into any building. You can see what is there inside the entire building. And if I particularly talk about the West, people, they have transformed their travel experience. So if I may not be interested to venture or hop inside a monument or a heritage building, just with the help of a metaverse, I can see what is inside there. Will it be of my interest? Should I hop into a building? Or I may leave that, right? So if we particularly talk about our country, Indian tourism, following the trend examples, we may see that in 2021, Kerala tourism also took a step in the tech direction by bringing an augmented reality, AR, app to launch virtual tourism guide in Kerala. They were the pioneers in our country. Delhi tourism, Dekho Meri Delhi app allowed tourists to plan their trip from start to end in a single platform along with the booking of all the tickets on that particular one platform. JW Marriott Mumbai Juhu has introduced QR codes at a critical touch points such as front desk, elevators, rooms, restaurants and recreational spaces. Roseate Hotels and Resorts have introduced live kitchens. You can order with the help of the app from your room, and while coming down to the restaurant, your food is ready, which is being served to you people. So this world is leading by examples, but we are still far behind. So we need to get ourselves integrate, and as rightly said by our chief guest, that if we will not integrate, if we will not adapt to the system, we will left far behind. And then we'll start cursing the system. And these voice search and voice control tools, robots, they have transformed. There might be arguments, there might be debates about their inclusion to the hospitality. Maybe yes or no, that the future will tell. But this is altogether a different experience. Artificial intelligence, chatbots, these are the things, and this tourism navigation, that also enables you to tell that which way you need to lead, right? So now what is required? Government and public entities, they need to frame policies to foster innovation, trade and the adoption of technologies, generally promote innovation in tourism and hospitality sector. Academia needs to focus on creating frameworks and models on the sustainable innovations in tourism and hospitality, and we should equip our students about such trends in hospitality and tourism education. This is the role of the academia, and we can propose these solutions to our governments so that they can be accepted and can be implemented in the industry as well. Thereby we can be able to have a better synergy between industry and the academia, which we are lacking nowadays. Many platforms are there when industry used to curse academia not to provide the skilled manpower and the people which are required at that par excellence for the industry, and academia tends to curse industry not to provide better remuneration to the coming generations. And this is the irony of the situation. Last night we were discussing that the trend is still, sir, that I may be wrong, but not fully, that we are still offering the
internship amount which we were offering 20 years back. The scenario has changed. We should have to keep the aspect of return on investment. And lastly, I would like to say that we tourism and hospitality academician in this country, we are having a phobia of research. That's what Dr. Shiv and I was discussing last night. We have learned this notion, we have been told by the previous generation that this research can't be happen, good research can't be happen in tourism and hospitality. My dear students, go to Google search, you will find that there are 2,700 journals which have been Scopus listed and which used to publish papers in tourism and hospitality. And if I particularly talk about the Asian tourism and hospitality academics, past 3 years, more than 27,000 papers have been published in the Scopus database. So where are the aspects where research can't be there? It's our will that we don't want to do good research. There are examples. You can quote Justin Paul, Amandeep Dheer, Parshuraman, which have given the cervical score, service quality scale. They are leading by examples from the West, but they were not accepted by the Indians. Research is an integral part for the innovation as well. And there is nothing impossible, I must say. We need to accept this and we need to work on this. We need to rethink this, because this World Tourism Day's theme was rethinking tourism. So we need to rethink about the aspect of research, innovation and quality teaching aspects as well, which we are lacking far behind. Without taking much of the time, I would like to close my speech with the words, with a saying which was given by the Ratan Tata, that innovation is the key to success, as those who copy others might ahead for some time, but they will not be able to sustain for a longer period of time. So we need to create our own, space, our own tag, our own, mark. So that's why we will be able to sustain for a longer period of time, or else we will be copying, cutting, pasting and publishing second generation papers, accepting from the West, implementing same scenarios in our country, and will just fetch good citations to the researchers who are sitting in the West. We will not be able to make our mark. And if we need to be Vishwaguru, we need to be led by the examples. Just quoting the term Vishwaguru on the dais on the various conferences is not going to help us out. With these words, I would like to put my voice at the rest. Thank you, organizers, and thank you for giving me the opportunity to talk in this international conference. Thank you very much. Come to show our teamwork, reviewers and researchers' efforts and hard work. Another feather is added to the cap of Bhikaji Kama Subharti College of Hotel Management. Today, we are releasing our 7th conference proceeding in this 7th International Conference, ATITHI. I would like to request Mr. Indranil Bose to bring the proceeding for the dignitaries. A big round of applause, please. Family is also feeling proud to recognize these icons. Swami Vivekanand Subharti University acknowledges Global Hospitality and Tourism Leadership Award to those individuals who are from the hospitality and tourism industry, living for the sake of others and who dedicated themselves to practice which promotes hospitality, tourism, universal moral values, strong family life, inter-religious cooperation, international harmony, renewal of United Nations, a responsible public media, and the establishment of culture of peace in the world. Let's begin with the first round of awards. I would like to request Dr. Shimwan sir to please present the trophy to Chef Jatinder Uppal. A big round of applause. Present our trophy to Dr. Lavkush Mishra ji. A huge round of applause, students. A huge round of applause. Dr. Jitendra Kumar.
I would like Dr. Jatashankar R. Tiwari from IGNOU University, New Delhi. The escorting team to escort all the dignitaries for the refreshment. Soon we will gather back to listen to our other speakers. Thank you. To begin our second session, over to Garima ma'am. Welcome back again. I feel grateful to have with us our Honorable CEO Madam, Dr. Shailya Raj. You hardly need any introduction, Madam. You are an empowered woman with distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge and experience, and above all, inspiration to all of us. Madam always says Swami Vivekananda's words to everyone: arise, awake, and stop not till the goal is achieved. I request you, Madam, to share your valuable views with us. Jai Hind. Honorable guests on the dais, all invited dignitaries, delegates, and dear students, all our faculty members. A very heartily welcome to our Subharti campus and a beautiful hotel, especially because this is our first conference here, and it's very delighting and elating that I get to welcome you to this wonderful hall. We've been working day and night to make this day possible. We've literally been working on the kind of marble and the kind of maths. I'm a dentist by profession, and this is my first in-hand experience with how a hotel works, because this is the first time I got to realize that how intricate the things are in the hospitality sector. And when we were working with the rooms, तो bedsheet कितनी white होनी चाहिए, and the towels, how difficult it is. You know, it's the first time I realized how difficult your work is, because this is the first time I was working as to be on the side of management. We were working and on how we were preparing the rooms for a delegation, and when this conference was ought to happen, that chandeliers सारे matching होने चाहिए, ये light color होना चाहिए, dark color होना चाहिए. So hats off to you. When before I used to go to a hotel or a restaurant, I never realized that how much work goes into. Everybody appreciates their own profession. As a dentist, I can tell you how difficult it is to manage a painful tooth, or if a patient comes with a very, very, a painful or a swelling or something like that. It was the first time I realized how difficult the hospitality sector is. So hats off to all of you. And a big congratulations to Dr. Shiv Mohan and all my team of very, very dedicated workers, all my dear students. This conference, not just the conference, this hotel also, they've worked day and night with us. They've been standing till night 2 o'clock. उन्होंने, अगर हमने एक एक पत्थर उठा के रखा है, गमले उठा के रखे हैं, you just saw Dr. Shiv Mohan pick the pot, और उन्होंने ये पहले भी किया है. जब हम यहाँ पे एक एक टेबल और चेयर उठा के रख रहे थे कि यही कुर्सियाँ ऐसे लगेंगी, not just me, even the founder of this university, Dr. Atul, if you've heard of him, he was also picking up chairs because we had to work day and night क्योंकि deadline थी. वो भी उठा रहे थे, तो ये भी उठा रहे थे. इनमें ये नहीं था कि मैं डीन हूँ, मैं एसोसिएट हूँ, या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, या हम बच्चे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स में होता है पैसे दे के आए, हम नहीं काम करेंगे. So that was not there. I'm very proud of each one of you. So thank you for being what you are. Thank you to all of you for coming and attending this conference and making this day possible. Without you तो ये होता ही नहीं. Conference में सिर्फ डॉक्टर शिव मोहन और मैं बैठे होते, एक दूसरे को सुना रहे होते. So thank you so much for being here, and thank you for listening to me for all such a long time. Jai Hind. Have a wonderful time. Have a wonderful conference. Now moving forward, I would like to take this opportunity to introduce our guest of honor, Professor Lavkush Mishra. Professor Mishra is holding the position of Professor and Director, Institute of Tourism and Hotel Management, Dean Faculty of Management at Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. He is having a vast 23 years of experience in his field. He is a PhD holder and NET qualified. He has visited 25 countries and delivered speech in UNWTO Global Conference in Lagos, Nigeria in November 2022. He has authored 15 books
30 plus research papers and 20 articles. He is also chief editor of International Journal of Tourism and Hospitality and published by Institute of Tourism Management. He has 8 patents and 5 MOUs under his name. He has been awarded with various prestigious awards like Braj Vyas Samman, Special Honor by Bharat Vikas Parishad, APJ Abdul Kalam Teacher Award, Eminent Professor Award, Distinguished Fellowship, International Academy of Business, Washington DC, USA 2017. I request sir to please share your views and enlighten us. Please sir. The persons on the dais and off the dais, my colleagues and dear students. First of all, I must congratulate this university in the name of Swami Vivekananda for holding this international conference. And the topic is very relevant, advancement of technology, especially in the hospitality sector. So that's good. We always talk about the technology, its innovations and intervention in the respective fields. Robotics, as Professor Walia was saying, artificial intelligence, virtual realities, all these are the recent technical terms which are being used all across the globe. But the basic, you see, we should think of whenever we plan anything, we must assess our resources, then the market, then the technology available. After all planning all these things, putting them all in right direction, we can achieve the desired goals. I am a student of management, especially tourism management you can say, but we realize many things in my life, in this teaching, you see, profession. Because large number of the students are here, that's why I want to share all these things among the students, so that they can plan their life, their career, and they can do better for the country. Because when they synchronize all these things in proper rhythmic manner, only then they can get success. They can get growth. I don't agree with the fact there are so many persons, they are experiencing growth but not success. There is little difference between growth and success. For example, it is happening not only in our, you see, the academic era, you see, world. We never look behind all these small things which paves the way for the future. Those who are from the tourism industry, they know, अभी भी जो एरोप्लेन थे उसमें VT लिखा होता था. एयरलाइंस के जो विंग्स होते हैं उसमें ऊपर VT लिखा होता था. आफ्टर इंडिपेंडेंस कभी हमने ये नहीं सोचा कि वो क्यों लिखा होता है. क्या आप स्टूडेंट्स बता सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड. VT का फुल फॉर्म होता है वायसराय टेरिटरी. आफ्टर 1947 क्या हमने कभी उस पर विचार किया? We are the laymen, but think of those giant people who are running the airlines, who are controlling the airlines, who are making policies for the airlines. They didn't look on this, you see, basic things. What about the parliament? Who formulates, who makes rules, regulation, laws for the country? They didn't look why we put budget at 5 p.m. We are doing it.
till 2004. Our parliament, just imagine, who were responsible to carry forward the country. They are supposed to make the laws for the land. They didn't look on that factor. जैसे गांव में कहावत है ना, हिंदुस्तान भेड़िया धसान, तो जो इंजन है उसको भी नहीं पता गाड़ी कहां जा रही है। हम लोग तो डिब्बे हैं। 2004 तक इस देश में बजट शाम को 5 बजे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा था। क्यों हो रहा था? नोबडी नोज इट। हो रहा है। क्यों हो रहे? क्योंकि जब देश गुलाम था तो क्वीन विक्टोरिया हमारे बजट को सुन सके, देख सके, तब वहां दिन के 10 बज रहे होते थे, 10-11। इसलिए शाम को 5 बजे बजट इंट्रोड्यूस किया जाता था। आफ्टर 1947 हमने उसको क्यों नहीं सुधारा? क्योंकि हम जानते ही नहीं थे। तो ये सारी चीजें नॉट ओनली इन एकेडमिक्स। अभी आप देखिए, आप बुक्स पढ़ते होंगे, आपको रेफरेंसेस कहाँ मिलते हैं? सारे जो ऑथर्स मिलेंगे, रेफरेंस मिलेगा, वो फॉरेन ऑथर्स का मिलेगा। मैनेजमेंट से लेके मेडिकल से लेकर के एवरीवेयर यू विल फाइंड आइंस्टाइन ने ये कहा, जॉन मिल्टन ने ये कहा, अब्राहम मास्लो ने ये कहा। भाई कभी चाणक्य ने भी क्या कहा? तुलसीदास ने क्या कहा? कबीरदास ने क्या कहा? तमाम हमारे ऐसे फिलोसफर्स हुए, हमने उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? आज ये इंटरनेशनल लेवल पे, फोरम पे, खासकर इस अमंग द स्टूडेंट्स मैं शेयर इसलिए करना चाहता हूं कि जिन देशों ने इस पे विचार किया, दे डिड वंडरफुल। जापान हमारे सामने है। स्वतंत्रता की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जितने साल हमारे हुए उतने साल उनके हुए, बट दे आर फार अहेड फ्रॉम अस, बिकॉज हमारे मन में एक लंबे समय तक गुलामी रही और उस गुलामी का डीएनए में हमारे असर हुआ। और उस असर का ये हुआ, गुलामी का, डीएनए का, कि आज भी हम दिमाग नहीं लगाना चाहते, हम सोचना नहीं चाहते, हमें हर चीज में इंफीरियरिटी है। अब वंस वी आर फेसिंग इंफीरियरिटी, we are facing complex. So how can we accelerate? How can we accelerate our economy? How can we excel in our life? And unless and until we don't excel in our personal life, the country can't move ahead, because country is made of all we people. If we individually, suppose, do growth in our life, so the country will grow. I am sharing 2-3 examples, recent examples. पीछे मेरा चाइना जाना हुआ। चाइना में नॉन वेज का वह है, खासकर पोर्क का ज़्यादा वह है। आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मैं सत्तू ले गया था अपने साथ वेजिटेरियन चॉइस के उसमें। जब मैं चलने लगा तो ढेर सारा सत्तू बचा हुआ था। फ्लाइट की लिमिटेशंस होती है, माने वेट का, तो मैंने सोचा कि थोड़ा खा के पी के बाकी इसको यहीं डंप करके छोड़ जाए, क्योंकि जितना इसकी कॉस्ट है उससे ज़्यादा हमें इसको फिर से कंट्री में ले जाने में फेयर का देना पड़ेगा। तो मैं रेस्टोरेंट में उसको पी रहा था, काफ़ी मग्गे में करके। एक वेटर बड़ी ललचाई निगाह से देख रहा था। वो हिंदी नहीं जानता, मैं चाइनीज़ नहीं जानता था। तो मैंने पूछा, वुड यू लाइक? हमें लगा कि आज भी हमारी मानसिकता क्या है कि हम लोग खाने को वेस्ट नहीं करते, फेंकते नहीं, नाली भी नहीं बहाते। या तो कुत्ते को दे देंगे, गाय को दे देंगे, जानवर को दे देंगे, या भिखारी को दे देंगे। इवन ट्रेन में जब हम ट्रेवल करते हैं, पुड़िया बच जाती है तो क्या करते हैं, भिखारी या गरीब आदमी को दे देते हैं जो बचती है। तो मैंने उसको वो किया, उसने इशारों में पूछा ये क्या है, तो मैंने उसको ऐसे बताया।
मैंने तो उसने बड़ी खुशी खुशी ले लिया और फिर वो अच्छी हॉस्पिटलिटी हमारे साथ वो किया। मेरा बैग वगैरह सब टैक्सी में रखा बाकायदे उसने। कहने का मतलब अब हमारे बच्चे को, अपने बच्चे को अगर आप सत्तू दीजिए तो शायद नहीं लेगा, सत्तू से उसे इन्फीरियरिटी लगती है। दूसरा एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली कोविड के ठीक पहले मैं फ्रांस में था, मेरे फ्रेंड थे, 2 लोग थे। हमने वहाँ पे जो मेट्रो का टिकट है वो बिल्कुल डिपार्टमेंटल स्टोर पे बिकते हैं, आप उसको जब पंच करेंगे तभी उस पर डेट वगैरह आ जाएगी, अदरवाइज आप उसको कूपन की तरीके से ख़रीद के रख सकते हैं, ऐसे था। और हमारे यहाँ जैसे 8-10 4-6 काउंटर तो होते ही है मेट्रो स्टेशन पे टिकट के, वहाँ पे ऐसे नहीं होता है, एक आध काउंटर शुरू में ही उनके डिपार्टमेंटल होता है, अदरवाइज प्राइवेट वेंडर्स बेचते हैं। हमने उसको दिखा के एयरलाइंस का टिकट खरीदा मेट्रो का, क्योंकि हमें वहाँ से फ्लाइट वेनिस के लिए पकड़नी थी। और उसमें फ्रांस में 3 एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, उसने मुझे टिकट दिया 29 यूरो का। मैंने लिया और भाग करके मेट्रो पे गए, जहाँ मेट्रो से एयरपोर्ट वाली स्पेशल जा रही थी उसका टीटी को हमने दिखाया, तो बोला, मैंने इशारा किया बैठने के लिए, हम बैठ गए। कुछ देर बाद वो चेक करते हुए आता है और 50 यूरो का फाइन लगा देता है मेरे और मेरे दोस्त पे। हमने उसको बहुत कन्विंस किया लेकिन वो नहीं माना। हमारे ही साथ एक साउथ अफ्रीकन था, दे वर टॉकिंग देयर लैंग्वेज, आई वॉज नॉट अवेयर, बट दे वर टॉकिंग इन फ्रेंच। मैंने उसको बहुत कन्विंस किया कि वी बॉट इट फ्रॉम योर वेंडर एंड ऑल दिस, ही वॉज नॉट एग्रीड विद अस। उसके बाद हमने उस सोचा कि आगे की हमारी फ्लाइट डिस्टर्ब होगी, पुलिस केस होगा, 100 यूरो दे के जान छुड़ाओ, दिया। जब वो चला गया, देन आई आस्क्ड दैट फेलो, जो अफ्रीकन बैठा हुआ था, साउथ अफ्रीकन, कि उसने क्या किया था। साउथ अफ्रीकन ने टिकट तो खरीदा था टोकन, लेकिन पंच नहीं कराया था। हमने टिकट खरीदा भी था, पंच भी कराया था, और जिस एयरपोर्ट से का हमारा वो था उसका $23 या यूरो केवल फेयर होता था। वी पे 29 यूरो, फिर भी हमने 50 यूरो, क्योंकि उसने बोला कि ये दूसरे उसका एयरपोर्ट का है, यहाँ का 23, उसका जो साउथ अफ्रीकन था उसका 23 यूरो का ही टिकट था। बोला यू स्पोक इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू वर फाइन्ड, दे आर द फ्रेंच, दे हेट इंग्लिश, better you have spoken in your own language, so you have not been penalized. So ये दूसरा उदाहरण है कि जिनको अपने लैंग्वेज पे शर्म आती, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तीसरा, आज भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर में अगर आप देखिए 5 स्टार होटल में, तो दरबान हम इंडियन कॉस्ट्यूम में बैठाते हैं उसको, बढ़िया मूछे उछे करके राजस्थानी, उसमें अंदर जेंटलमैन कोट पैंट टाई वाले बैठाते हैं। क्यों? अंग्रेज तो नहीं है ना, आप देश गुलाम तो नहीं है ना, अब हमारा शासन है ना। ये हमारी इन्फीरियरिटी है। तभी हम 48 डिग्री टेम्परेचर में, शादी के टाइम में दूल्हा उस दिन का तो बॉस ही होता है, चीफ गेस्ट भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, हर कुछ वही होता है। क्यों मैडम? उस दिन का तो माने अट्रैक्शन ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन उसको भी क्या करते हैं, अभी थोड़ा चलन पड़ा है इसका शेरवानी वगैरह का, नहीं तो 48 डिग्री में हम उसको कोट पैंट टाई पहना करके घोड़े पे बैठाते हैं मई जून में के महीने में। और बाराती जो डांस करते हैं 48 डिग्री में बाकायदे डांस करते हैं पूरे उत्साह के साथ। मेरे ख्याल से ताली से ज़्यादा ये हमें सोचने की ज़रूरत है एज स्टूडेंट्स, क्योंकि यहीं से इंटरप्रेन्योरशिप निकलेगी। जो मैं शेयर कर रहा हूँ यहीं से इंटरप्रेन्योरशिप निकलेगी। जब हम अपने भाषा में सोचेंगे, अपनी जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से जो भी हमारी चीज़ें हैं
उन पे प्राउड फील करेंगे, खाने की भी चीज़ों में प्राउड फील करेंगे, अपने कस्टम्स में प्राउड फील करेंगे, वहीं से हमारे ग्रोथ की शुरुआत होगी। नकल से शुरुआत नहीं होगी। अगर मैं आगरा से हूँ, अगर हमारे पास ताजमहल है, तो मैं दुबई में ताजमहल का रेप्लिका देखने क्यों जाऊँगा? When we are having the original ताजमहल। लेकिन ज़रूरत है कि जब हम खुद ही हीन भावना से ग्रसित हैं तो कैसे वो करेंगे? और ये जो इन्फीरियरिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे वो करती है? आप जितने स्टूडेंट्स हैं गूगल करिएगा BTW, बिट्टू टिक्की वाला, ठीक, बिट्टू टिक्की वाला का केस स्टडी आप पढ़िएगा। बिट्टू टिक्की वाला आप ही जैसा एक नौजवान था, यादव थे, अयोध्या के पास का लड़का, नौजवान लड़का 26-27 साल का, ट्यूशन पढ़ा के अपना करियर शुरू किया अपने गांव में। शादी ब्याह का टाइम आया तो उसके पास ये लगा कि 500 रुपये में कैसे जीवन चलेगा। तो लोगों ने बताया कि ट्यूशन ही पढ़ाना है तो दिल्ली में पढ़ाओ, वहाँ घंटे के हिसाब से ट्यूशन का पैसा मिलता है एंड यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। देन ही मूव टू दिल्ली and he was not having much contact in employment bureaus and other things. So उसके रिश्ते का एक चाचा था, उसके घर पे गया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ दिन रहने दीजिए, मुझे जॉब करना है, आप जॉब मेरी लगवा दीजिए। उसके जो चाचा थे वो ठेल पे चाट पकौड़ी लगाया करते थे। उन्होंने कहा कि तुम तो BA किए हो, पढ़े हो, मैं तो अनपढ़ था इसलिए चाट लगाता था, तो मैं तुम्हें जॉब कहाँ से करूँ? गांव में जैसा माहौल है। उसने भी वहाँ पे ढूंढा, 10-15 दिन जॉब ढूंढा, नहीं मिला। उसके बाद उसने लगा कि बहुत दिन हो गए चाचा के यहाँ, कि इसके पहले यहाँ से कह दें कि बेटा तुम जाओ। तो उसने खुद ही कटसी बस कहा कि चाचा अगर कहो तो मैं आप ही के साथ कर लूँ कुछ काम, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही है। तो बोले बेटा मेरे पास कोई जॉब ही नहीं तेरे लायक, बर्तन धोने का है, बाकी असिस्ट करने का है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी नौकर रखा है, तू तो पढ़ा लिखा है। तो बोला नहीं, घर में मत बताइएगा, तो मैं आप ही के साथ कुछ कर लेता हूँ जॉब, गांव में मत चर्चा करिएगा, क्योंकि गांव में बेइज्जती होगी, मैं यहाँ पे प्लेट वगैरह धो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 4000 रुपये महीना उसी को देना शुरू किया कि ठीक है, जैसे वो 4000 लेता है तू भी ले लिया कर, तो भाई रहना खाना फ्री है। 8 महीने उसने काम किया। अब देखिए उसने फिर अपने चाचा की दुकान को थोड़ा ठीक ठाक किया, उसके जो गंदगी वगैरह रहती है उसे ठीक ठाक करके थोड़ा वो किया। 32,000 रुपये उसके पास जब हो गए तो उसने कहा कि चाचा अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं अपनी एक चाट की दुकान खोल लूँ। चाचा को भी लगा बहुत दिन से मेरे घर पे रह रहा है, खा रहा है, जल्दी से हटे तो अच्छा है। उन्होंने कहा खोल ले, लेकिन बेटा ध्यान रखो हमारी लोकेलिटी में मत खोलना, नहीं तो हमारे धंधा प्रभावित होगा। उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरे उस पर खोल लेते हैं। उसने पॉश कॉलोनी में खोला, बढ़िया साफ सफाई से दुकान चलने लगी। वहाँ एक रिटायर्ड IAS फैमिली आती थी, हस्बैंड वाइफ थी। उसने कहा, वो आते थे, अक्सर आते थे, उसका क्वालिटी उन्हें अच्छी लगती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम किटी पार्टी वगैरह क्यों नहीं करते हो? तो बोला ये क्या होता है? बोला ऐसा करो तुम अपना एक ब्रांड बना लो, और ब्रांड बना करके एक अपना विजिटिंग कार्ड छपाओ, बिजनेस कार्ड, और उसके बाद शुरू हो जाओ और किटी पार्टी वगैरह किया करो। वो खुद छपवा के उसको दिए। देने के बाद फिर उन्होंने शुरू किया और देखा कि जितना उसके महीने में कमाई होती है 2-3 किटी पार्टी में ही उससे ज़्यादा उसको कमाई होने लगी। फिर धीरे धीरे उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, अपने गांव से और लोगों को लाया, और आज वो फ्रेंचाइजी देता है। मोर देन 100 करोड़ की कंपनी है, और भाजपा का जो हेडक्वार्टर है उसका पूरे कैंटीन मैनेज करता है। मैंने 4-4, 5-5 हज़ार का जो पार्टी कार्यकर्ताओं का खाना बनता है, ही ऑल्सो डील्स विद दैट। अगर आपके अंदर शॉर्ट फॉर्म, उन्होंने BTW नहीं किया, ये बिट्टू टिक्की वाला नहीं लिखा, BTW लिखा, मार्केटिंग अपने आप ही है। जो पीटर इंग्लैंड की शर्ट आती है वो कोई इंग्लैंड की नहीं है, स्वदेशी ब्रांड है।
लेकिन चूंकि हम गुलाम हैं, हमें इंग्लैंड वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए जो है जगुआर टाटा का है वेंचर, लेकिन वो बाहर उसको जगुआर के नाम से ही बेचते हैं, क्योंकि हमारे टाटा के नाम पे फिर ये हो जाएगा ना कि वो एक मिडिल क्लास सेगमेंट पे आ जाते हैं। और एक नहीं, आपके ढेर सारे एग्जाम्पल्स है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लिट्टो आप ये देखिए कि मुंबई से लिट्टी जो चोखा होता है वो एक्सपोर्ट होता है। ढेर सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप दूर मत जाइए, छाछ जो हम पीते हैं, आज से 10 साल पहले छाछ को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, कोल्ड ड्रिंक पिया करते थे, थम्स अप, लिम्का एंड ऑल दीज थिंग्स, कोका, पेप्सी। बट जब से बाबा रामदेव ने कहना शुरू किया और वो टेट्रा पैक में आ गया, तब से अब लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में जूस और छाछ पीते हैं। दातून का अभी यंगस्टर से आप वॉलमार्ट में सर्च करिएगा, अमेरिका के मैं गया था तो अपने फ्रेंड के साथ गया था वॉलमार्ट में, तो मैंने देखा तो वहाँ दातून का 10 का पैकेट, जैसे पेंसिल का पैकेट आता है ना ऐसे ही, $15 का था, $15 का। अब आप इसके दातून का डॉक्टर साहब ने चर्चा करी पूरी साहब ने, तो आप इसके बैक में आ जाइए, कैसे देश को बाजार बनाया जाता है और हम आप कैसे उनके हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बोर्नविटा को बेसिकली जो खली, ये मूंगफली होती है, मूंगफली की खली है, रोस्ट करके उसको करते हैं, फ्लेवर में ऐड करते हैं। दातून का अगर आप ध्यान दीजिए कि आज से 15, 20, 25 साल पहले की बात है, एक एडवर्टीजमेंट आता था, एक पहलवान जी लुंगी लगा करके अंगोछा रखे हुए कोयला कर रहे होते हैं, कोयले से दांत साफ कर रहे होते हैं। डेंटिस्ट मैडम हैं, उनके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ मामला है। फिर एक लड़का स्कूल का टाई लगाए हुए स्कूल ड्रेस पे आता है, कहता हो पहलवान जी छी छी, बॉडी के लिए दूध बादाम और दांतों के लिए कोयला, छी छी। तो उन्होंने बोला कि फिर क्या करें, ये लो कोलगेट। तो कोलगेट का पाउडर पहले छोटे टीन के डिब्बे में आता था, तो उसको पकड़ा देते हैं, पहलवान जी उसे फेंक देते हैं और कोयला फेंक करके उसके बाद फिर उससे करते हैं कोलगेट का जो पाउडर होता है, और उसके बाद फिर दांत निकाल के शो करते हैं कि अब दांत बिल्कुल साफ हो गया, और वो खुश हो जाते हैं। आप ये विज्ञापन था, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरे देश से दातून फेंकवा दिया, केमिकल पकड़ा दिया। केमिकल के बाद अब छोटे छोटे बच्चों के भी दांत खराब होने लगे, क्योंकि जो उसका नेचुरल इनेमल्स होता है वो ख़त्म हो करके और केमिकल के द्वारा फिर उसकी दवा, भाई दांत पहले पाउडर करो, अब तो पेस्ट आ गया, फिर उसका दवा करो, तो दवा का पूरा ड्रग का मेडिसिन का पूरा बाजार 130 करोड़ का पैदा हो गया उनके लिए। उसके बाद जब बाबा रामदेव वगैरह थोड़ा जोर देने लगे वैद्य और ये सारी चीज़ों पे, आयुर्वेदिक उस पे, तब वही विज्ञापन कैसे आता है। एक विज्ञापन में एक्ट्रेस आती है और मुंह में माइक लगा के पूछती क्या आपके पेस्ट में नमक है, और कोलगेट वैदिक शक्ति आने लगा। क्योंकि हम लोग सारे वैदिक परंपरा के हैं, तो वेदों के प्रति आनर है। देखिए मार्केट की स्ट्रेटजी देखिए, और इसलिए उसका नाम सेंटिमेंटल वैदिक रख दिया, कि जिससे अब हम कोलगेट की जो लॉयल्टी ख़त्म ना हो, कि वी आर वैदिक एंड वी आर यूजिंग माने चारकोल एंड को ये दिस सॉल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि कल देश के ड्राइविंग सीट पे आप होंगे, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को आप लीड करेंगे। अगर आप देखिए दातून हमसे फेंक करके, वही नीम की दातून लगभग 120 रुपए की एक दातून पड़ रही है मार्केट में। अमेरिका वगैरह में 100 से 120 के बीच में एक नीम की दातून पड़ रही है, और उसका नाम है ऑर्गेनिक टूथ ब्रश। आप भी सर्च कर सकते हैं। अब आजकल झूठ बोलने का कोई ज़्यादा स्कोप रहा नहीं है, गूगल बाबा है, यू कैन वेरीफाई इट। एक जयपुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, देवर द डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वहाँ 4-5 लोगों को ताजमहल देखना था, तो मैंने उनसे निगोशिएट किया कि ठीक है हम आपको ताजमहल दिखवा देते, आप हमारे बच्चों को कुछ इंट्रैक्शन कर लीजिएगा। बोले ठीक है। 3 दिन उनका स्टे मैंने किया।
ये बात 8-10 साल पुरानी है, मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो आए, मैंने अपने कलीग से बोला, जैसे शिव मोहन जी हैं यहाँ बढ़िया हॉस्पिटलिटी वो कर रहे हैं, तो हमने कलीग से बोला कि एक दिन पहले दिन तो ठीक है, उनको होटल क्लार्क शिराज में ठहराया हुआ था। दूसरे दिन मैंने कहा कि लंच हम लोग यहीं करेंगे और तहरीक करेंगे, यहीं पे ऑफिस में खाना खाएंगे इंस्टीट्यूट में। हमारे जितने कलीग थे, मैं गुरुजी की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, कि जब गुरुजी में कितनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो आप में होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा मिश्रा जी नाक मत कटाइए, तहरीक खाएंगे वो लोग विदेश से आकर के, अच्छे रेस्टोरेंट में खिलवाएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी पैसा नहीं देती तो हम लोग कंट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन खिलवाएंगे 5 स्टार होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट में। हम कहते नहीं, लेट वी ट्राई। मुझे थोड़ी इच्छा भी रहती है एक सोशल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम फिजिकल साइंसेस के साइंटिस्ट नहीं है कि हम लेबोरेटरी में करें। हमारे लिए पूरा संसार ही क्या है, आप भी हमारे लैब है, लेबोरेटरी है, समाज हमारे लिए लेबोरेटरी होता है। तो चलते फिरते एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते हैं। तो हमने यही सोचा कि देखें इनका क्या वो होता है। तो मैंने उनको सेकेंड डे अपने पहले जो कलीग्स थे उनको कन्विंस किया, और हमने घर से तहरी बनवा करके बढ़िया पापड़, घी, सलाद, अचार पूरा वहाँ खाना खाया। उसके पहले उनको मैंने कन्विंस किया, दिस इज स्पेशल डिश, दिस इज प्राइम मिनिस्टर फूड, समटाइम्स इट इज कॉल्ड बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर टेक इट इन हिज लंच, इट इज फुल ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, ऑल द विटामिन्स। क्योंकि तहरी में पूरी सब्जियां पड़ती ही हैं, तो इतना तो हम समझ ही सकते थे, कितना सारी चीज़ें तो होती ही होंगी। उनको कन्विंस किया, और वो 5 के 5 जो बड़े खुश थे पूरा। हमारे जो लोग थे वो थोड़े उदास थे जरूर। और जब 4-5 दिन बाद में क्लार्क सिराज में हिसाब किताब करने गया, उनका उस समय भौमिक साहब जीएम हुआ करते थे, तो भौमिक साहब ने कहा कि मिश्रा जी ये क्या प्राइम मिनिस्टर फूड का भपूत लगा रखा था आपने? हम क्या हुआ? दे वर आस्किंग मेन्यू देख के कि नहीं, वी वांट प्राइम मिनिस्टर फूड, वी वांट प्राइम मिनिस्टर फूड। तो ये क्या है वो था, तो हमने उनको पूरा बैकग्राउंड बताया। तो कहने का मतलब ये कि दुनिया के मन में ऐसा नहीं है, हमारी जो चीज़ें हैं बेहतरीन है, हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अगर हमारे पास ये सिस्टम है, हम खुद ही इन्फीरियरिटी से ग्रस्त हैं कि ये अच्छा नहीं है, तो हम एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं कर सकते, इसको बेच नहीं सकते दुनिया में। जब बेच नहीं पाएंगे तो हमारी प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। जब हमारी प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी तो हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए हमें, और दूसरी चीज़, ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी है। जो मिल्स है, जो खाना है, ये खाना नहीं है, ये हमारा कल्चर है। आज हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो हमें इटली की याद आती है, आज हम नूडल्स खाते हैं तो चाइना के होते हैं। कहीं कहीं हमारे मन में एक सिंपैथी क्रिएट होती है चाइना के लिए, नूडल्स खा करके। तो ये कल को जब हम अपने सत्तू इंटरनेशनल ब्रांड में बेचेंगे, लिट्टी बाटी चोखा बेचेंगे और दाल बाटी चूरमा बेचेंगे, ठीक है, तमाम लोकल फूड्स को करेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग करेंगे, तो हमारे इंडिया की संस्कृति भी क्या होगी, ग्लोबल लेवल पे जाएगी। आज जो लोग बेवकूफ़ी की बात करते हैं, तमाम पॉलिटिशियन, हालांकि उनको उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, जो है वो पब्लिकली कह नहीं सकता, क्योंकि जो देश के साथ विश्वासघात करते हैं वो ठीक नहीं है। दे आर द लीडर्स, दे मस्ट बिहेव लाइक दैट। अभी जैसे आप ये देखिए, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि हम वियतनाम को पानी क्यों भेजते हैं। पानी की प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ से पूरा जहाज लेके पानी जा रहा है। श्रीलंका को हम तेल क्यों दे रहे हैं ज़बरदस्ती, वहाँ पे परेशानी है जिससे वो हमारा पड़ोसी उबर है। करते हैं कि नहीं? वैक्सीन हम क्यों भेजते हैं? ये कहीं न कहीं हमारे देश को मजबूती प्रदान करता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ये हमारा रिलेशनशिप डेवलप करता है। जब हम वर्ल्ड फोरम पे बैठते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वो हमारे साथ खड़े होते हैं। भारत का प्रभुत्व बढ़ता है
भारत की गरिमा बढ़ती है, उनका सपोर्ट मिलता है, उनकी सिंपैथी हम गेन करते हैं एज अ राष्ट्र। और लीडर कौन होता है? जो लीड करे। लीड तलवार से नहीं होता है, दिल जीत करके होता है। और भारत तभी राष्ट्र, भारत एज राष्ट्र तभी क्या बनेगा? विश्व गुरु तभी बनेगा जब दुनिया के देश उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। आज देखिए, जब योगा की बात आई तो पूरी दुनिया ने, सोचिए, ऐतिहासिक 176 शायद उस समय कंट्री ने सपोर्ट किया था। अब वो योग नहीं है। जब भी योग की बात आएगी तो योग कहाँ की विद्या है? इंडिया की। दैट्स व्हाई दिस लैंड इज कॉल्ड मदर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये धीरे धीरे हमारी संस्कृति को क्या करता है? रिकॉग्निशन दिलाता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों से आज जो बात कर रहे हैं, चैलेंजेज है, फेसेस आएंगे, आ रहे हैं और आएंगे भी, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हॉस्पिटलिटी में मशीन कैन नॉट रिप्लेस द मैन, लेकिन इट कैन स्मूदर द प्रोसेस। जैसे अभी उपल साहब कह रहे थे कि वेजिटेबल कटिंग की हमारे पास मशीनें हैं, तो ठीक है, ये लेबोरियस वर्क है, प्रोसेस में कहीं न कहीं इंटरफेयर कर सकती है मशीन, लेकिन जिस मुस्कुराहट के साथ गर्मजोशी से हम गेस्ट का स्वागत कर सकते हैं, मशीन कैन नॉट डू इट। तो सबसे ज़्यादा वी आर लकी कि हम हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हैं, जहां मशीन के खतरे नहीं हैं, बल्कि मशीन से क्या है? हमारे उपयोगिता है। मशीन हमारे उपयोग में आएगी, लेकिन मशीन से हमारे कैरियर में खतरा नहीं है। लेबर क्लास में अगर आप सोचेंगे तो ज़रूर खतरा है, लेकिन वंस यू टॉक अबाउट द मिडिल मैनेजमेंट एंड अपर मैनेजमेंट, देयर इज़ नो एनी चैलेंजेस। हाँ, उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे करें, इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अभी देखिए रोबोटिक्स में, हैदराबाद में रोबोटिक्स का वो है, रेस्टोरेंट है, तो लोग जाते हैं सिर्फ ये देखने की कैसे रोबोट काम करते हैं, लेकिन रिपीटर्स शायद ही जाए, क्योंकि मशीन उनको वो इंजॉयमेंट नहीं दे सकती जो हम मैन टू मैन दे सकते हैं। सही है कि नहीं? कभी आप देखिएगा, पहले रिलायंस का एक रिलायंस फ्रेश के नाम पे और सुभिक्षा के नाम पे ढेर सारी सब्जी की दुकानें खुली थी, छोटे छोटे शहरों में मॉल खुले थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, उन्हें बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने नकल किया यूरोप वगैरह का, जहाँ लोग के पास टाइम कब होता है। क्योंकि हमारे यहाँ सब्जी खरीदना एक मनोरंजन का साधन है। जो कॉलोनी है, आप देखो डिफेंस वगैरह में या जहाँ सेंट्रल सर्विसेज के लोग रहते हैं, उनकी वाइफ जाएंगी तो पूरे मोहल्ले का चर्चा करेंगी, सब्जी वब्जी खरीद के तब आएंगी। जो रिटायर्ड लोग हैं जाएंगे, इंटरटेनमेंट करके अपना लौटते हैं। और जब तक कार से भी बंदा जाएगा, जब तक धनिया फ्री में नहीं डलवा लेगा आलू के साथ, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो ये एक हमारा कस्टम कल्चर का पार्ट हो चुका है, इंटरटेनमेंट का साधन है। हमारे पास समय है, एक सोशलाइजेशन का एक तरीका है, आप उसको सोशल साइंटिस्ट की नज़र से देखिए। और इनोवेशन के बहुत स्कोप है। अगर हम एग्रेसिव मार्केटिंग की तरफ सोचें, दुनिया की तरफ सोचें, हमारे पास है। हमने अभी जो उदाहरण बताए उनमें ऐसा नहीं है, हॉस्पिटलिटी, फूड प्रोसेसिंग का बहुत एग्जाम्पल है। 300 करोड़ रुपए का हम टोमेटो प्यूरी इंपोर्ट करते हैं हर साल, और वहीं आप अखबार पढ़ते होंगे कि किसान अपने टमाटर को सड़कों पे फेंक के ट्रैक्टर चलाते हैं गुस्से के मारे, क्योंकि उनको उनका कीमत नहीं मिलती है। ये कौन करेगा? हम और आप करेंगे, बच्चे करेंगे। क्योंकि अगर आप ठीक से पढ़ाई किए होते तो उन टमाटर का इस्तेमाल करते, फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालते। लेकिन हमें तो बस दो चीज़ों को गाली देनी है, एक सरकार को कि रिजर्वेशन बहुत है, नौकरियां कम हैं, और दूसरा भगवान को कि भाग्य मेरा खराब है, सुनता नहीं है। मेरे 4 जगह इंटरव्यू दिया, कहीं नहीं हुआ, और दोनों ही नहीं सुनते। सामने हो तो आदमी गाली दे, सरकार को गाली किसको दोगे? भगवान को कहाँ गाली दोगे? खुद देख करके खुश हो जाओ। तो इसलिए हॉस्पिटलिटी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, अपने देश के रिसोर्सेज को देखिए, और जो नहीं हुआ उसके प्रति इन्फीरियर बहुत ही स्कोप है। उन सभी चीज़ों में जो अभी तक नहीं हुई है, आप उनको आइडेंटिफाई करिए एंड मूव अहेड। वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर यू पीपल। गुड लक। थैंक यू। Now I request
Dr. Shiv Mohan and Dr. Shaila Raj to kindly present token of gratitude to all the distinguished guests. First of all, our chief guest, Chef Jatinder Uppal sir. Our guest of honor, Dr. Lavkush Mishra sir. Dr. Riaz Qureshi from University of Kashmir. Dr. Jata Shankar Tiwari from IGNOU University. Dr. Sandeep Walia from LPU University. Dr. Amit Kumar Singh from Sikkim University. Dr. Rajiv Mishra, Dean Galgotia University. Dr. Madhumita, Rayat Bahara University, Chandigarh. Dr. Deepak Tilgoria, GNA University. Professor Ratan Lal Sahu sir, Director Diwan IHM. Among us, we have a very prominent personality from Kashmir, Dr. Riaz Qureshi sir. He is a senior tourism academician and a professional with a vast industry and academic experience. Dr. Riaz is presently working as coordinator, Department of Tourism, Hospitality and Leisure Studies, University of Kashmir. Prior to this assignment, he was working as assistant professor and coordinator, Tourism Management Program and Directorate of Distance Education, University of Kashmir. Before that, he also served Department of Tourism, Government of Jammu and Kashmir. Please, sir, for your kind words. Respected dignitaries on the dais, today's chief guest, Chef Uppal, Professor Lavkush Mishra ji, Professor Tiwari ji, Professor Sandeep Walia ji, my colleagues and dignitaries of the dais, dear students, indeed a matter of great pleasure to be here in Meerut in connection with the participation in this 7th International Conference titled Advanced Technology and Innovation in Tourism and Hospitality Industry. As we all are aware about the fact that over the period of the time, tourism and hospitality industry has emerged as an important economic activity which has been playing a very pivotal role in the overall development of tourism. My respected colleagues and friends on the dais had a detailed deliberation regarding the theme of this today's conference. So talking about this tourism and hospitality industry, which over the period of the time has emerged as one of the fastest growing industry in the world, and realizing its importance, every country is now trying this level best to get the maximum share from this ever-growing industry. Not only there is competition among different countries at the international level, but there is a competition within the countries among the different states. There used to be the time when talking about the state of Jammu and Kashmir, which now is the union territory, but of course the youngest union territory. Jammu Kashmir used to be the synonym to tourism. So we had been enjoying tourism and there was no concept of tourism not only in other parts of the country, but of course when there was no concept of the tourism in this whole continent. We used to attract the attention of the people from all over the world when there was no technology, when we were not connected
by fast-moving planes to the rest of the world. My colleagues who are teaching tourism are well aware that we are talking about the father of modern tourism, Thomas Cook. When we go through the historical references of the modern tourism, so during the colonial period when Thomas Cook used to organize tours to this part of the world, in the itinerary, Kashmir used to be the first, and then on return they used to visit Mishraji's Agra. But over the period of the time, in our country, the authorities at the helm of affairs realized the importance of tourism. And of course, the biggest question is why tourism? We are talking about advanced technology and innovation in tourism. First and the foremost question is why tourism? Why not other activities? Talking about tourism, you know, it is playing an important role in what we say creating vitamin M. Tourism is an important economic activity. ये कोई दान नहीं है कि लोग आ जाएंगे आना फ्री जाना फ्री. The underlying philosophy is that to earn profit, economic development, employment generation, revenue generation, and of course foreign exchange earning. Because when we are talking about global economy, it is not the local currency, it is ultimately the foreign exchange. So keeping in mind the role tourism is playing in economic development, in revenue generation, in foreign exchange earning, every country is trying its level best to attract the maximum number of the tourists. But talking to our country, which is spread over a vast geographical area, our country is a world itself. It is a world itself. So if we are talking about UP only, अगर यूपी का ही हर एक बंदा एक एक पत्थर उठाएगा, we will have another Himalaya. See, that is the population. But when we are talking, when we are having such national and international conferences, discussions and deliberations, why don't we discuss that even though India is spread over a vast geographical area, having innumerable resources, we're talking about countries which are doing excellent in tourism, they don't have such a huge geographical area. We have diversity. I was talking to my colleagues yesterday evening that it is minus 2.9 in Srinagar during night. कल जब मैं निकला तो रात का टेम्परेचर minus 2.9 था. गुलमर्ग में it was minus 7. Pahalgam is minus 9. And the temperature here is quite different. When I landed at Delhi International Airport, खुजली होनी शुरू हो गई because I was wearing so many of the cloths because of the minus temperature in Srinagar. The first thing is that I have to rush to the washroom and get the clothes changed. See the diversity, climatic diversity. आपके यहाँ स्टॉर्चिंग हीट होती है, टचिंग 45, 48, 49, 50, सभी दिल जले कश्मीर आ जाते हैं. Because our highest temperature is 33, 34. लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में दिल जलों की तादाद बढ़ गई है, तो हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली टेम्परेचर बढ़ ही गया है. So see the climatic diversity our country is having. A place, Dras, yesterday I was talking to my lovely friends, just 160 kilometers from Srinagar, on way to what we say the Ladakh. So the second coldest place in the world. Yesterday, last year, the Ministry of Tourism, Government of India organized a National Winter Sports Horse Polo in Dras. And Mr. Patil was the tourism minister. So I had an opportunity to participate, and it was minus 29 degrees. Try to understand, see the diversity. We have climatic diversity,
we have religious diversity, we have cultural diversity, and of course, we have different flora, we have different fauna. The Honorable Chief Guest was telling that हमारे यहाँ तो after every kilometers you see the cuisines का जो है वो change होता जाता है. If you are in Kashmir, on marriages we used to have the Vazwan, a feast fit for an empire. Some 24 varieties of mutton, and 4 people are jointly eating that is the copper plate which is called a trami. Market rate is 750 rupee per kg of mutton. We used to take sheep, not the goat. हमारे यहाँ goat नहीं खाते हैं. अगर मटन बेचने वाले ने goat लाया होगा तो the very first thing he will be doing, वो उसकी दुम काट के रखेगा कहीं ये ना पता चले ये goat का mutton है. And in a very common and middle class family marriage, we can have more than 3 or 4 quintals of mutton which are being cooked in marriage. You see the difference. You see the cultural diversity on the Shivratri. If you are in Kashmir, we used to visit our Pandit brothers and they used to prepare special varieties of fish. Although it is not in anywhere when we are talking about Shiv ki puja pe non-veg. So it used to be feast in Bengal, but it used to be fast during Navratras in North India. See the diversity. So although where nature has bestowed us with innumerable natural resources, we have a huge coastal area. But we had not explored. हम वहाँ जाते हैं when we go to Kerala, when we go to what is called this Goa, है ना? हम तो वो यूरोपियन नंगे लोग ही दिखते हैं, but हमने कभी इस पे विचार नहीं किया. So what is the reason? So you see the climate has one of the major attraction that they are coming to this part of the world. So we have cultural diversity, we have religious diversity, we have lingual diversity. But the unfortunate thing is, when we are going through the statistical data given by the either Ministry of Tourism, Government of India or United Nations World Tourism Organization, you know, our share in the international market is meager. So international moment of tourists, uska just 1.few% we are receiving. Although, you know, we have a lot to offer. बाकी कंट्रीज में एक जैसा कल्चर ट्रेडिशन मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये डिफरेंट है. So we need to ponder when we have such a gathering of academicians and practitioners. So we need to ponder advanced technology and innovation in tourism is the prerequisite for success. We cannot sustain. I had spent most of my time, my schooling in Dehradun, and we used to use this route. Delhi से हम देहरादून जाते थे. रात को ट्रैवल करने की एडवाइजरी थी कि रात को ट्रैवल मत करो इस रूट से. I'm surprised that a huge chunk of tourists, yatris, pilgrims are visiting Uttarakhand, the Char Dham of Uttarakhand. But I am not saying that the Ministry of Tourism has succeeded to develop this region which the people are using to reach, whether it is Kedarnath, Badrinath, Yamunotri or Gangotri. So see a very small distance when we are talking about the tourist generating market or the what we say the circuit, Delhi and this Haridwar. We don't experience any tourism related infrastructure when we are talking about Meerut. Otherwise, you know, the millions of domestic tourists are visiting to Uttarakhand. So the neighboring states or the UP could have benefited by diverting those tourists who are visiting these religious places. But unfortunately, we have miserably failed. So we need to discuss and deliberate when we are talking about tourism. So it is not possible without advanced Shatabdi or Rajdhani Express.
अपनी रफ्तार पे चलती थी, तो then the railway ministry has to decide कि नहीं इसकी स्पीड कम करो, because we don't have that much of technology, we don't have that much of railway lines. तो बुलेट ट्रेन तो दूर की बात है. आज की डेट में we are talking, it is not only we have Airbus, now NASA and Airbus, they are jointly working for that, having the planes with the capacity from 600 to 1000. We have supersonic planes, we have hypersonic planes. Now they say कि अब उस रफ्तार से चलेंगे in 2030 कि their speed will be above 6000 kilometers per hour. So अमित जी वहाँ सिक्किम से आ जाएंगे, so it will be the matter of minutes. So when we are talking about tourism, at one time we know what I told you, why tourism, of course playing an important role in employment generation, revenue generation and foreign exchange earnings, but of course there is an increasing competition, and the competition is increasing day by day. My senior colleague Professor Laukush was sharing his experience. हमारे लिए तो अभी भी मंगेरी लाल के हसीन सपने दिख रहे हैं, because when we are talking about tourism development in our country, which is bestowed with the resources, we don't have advanced technology. Although, to be frank enough, Nitin Gadkari is doing very excellent job. We have a good network of roads. We are seeing a very remarkable and revolutionary infrastructure development all over the country. But lot has to be done. And of course, it is not only advanced technologies in what we say the tourism infrastructure development, but at the same time we have to think that tourism is having the negative impacts. इसका character बहुत खराब है. It is just like a double-edged sword. It is having only positive impacts. It is generating revenue, of course. It is generating employment. But there is a factor of seasonality. There are so many factors. So we are known all over the world for our tradition, for our culture, for our linguistics, for our religious and cultural diversity. But when we are talking about tourism, it is commercialization. We are losing our culture, our tradition, our flora and fauna, our water bodies. You see what is happening to Himalayas because of unplanned tourism development. So it is not only we are supposed to have the advanced technology so far as infrastructure is concerned, but we have to minimize the negative impacts of tourism, and then only we can survive. It is not only that you and me have to get benefited from the present resources, but we have to think about our future generations also. Our identity is our culture, our tradition, and we have to preserve and conserve our tradition, our culture, our resources. For that we have to use technology. We don't have a proper solid waste management. You know, with the increase in the number of the tourists and the tourist related activities, what has happened to our these places, I was talking about this Gadwal region. So we have experienced it in 2014, the floods in Kedarnath, and then after in Kashmir. And this year in other part of Kashmir, which is unfortunately occupied by the Pakistan. So this unplanned development is creating a havoc. So of course we have to go for the infrastructure development, but it should not be at the cost of the ecology and environment. And then talking about innovations, it is not possible to survive in the present increasing competition unless and until we don't have innovations. We have a lot to explore. Unfortunately, tourism is confined to the traditional tourist destinations. But a lot has to be done to bring the potential tourist destinations on the national and international tourism map. And of course, in that regard, the academic institutions have to play a very important role. Laukush Mishra ji was just talking about his recent visit. You know, when we are talking about Europe and the developed world, the universities are think tanks there, but here it is vice versa. So they are taking the decisions irrespective of political affiliations.
So they have patriotism. But the unfortunate thing is we lack patriotism. We can have advanced technology and innovation. Advanced technology and innovation without patriotism, the result will be zero. So concluding with the request that all the academicians who are representing the different academic institutions, of course nice to see people from different parts of the country who are participating in this conference, and we are highly thankful to Dr. Shiv Mohan ji for providing us this platform and opportunity. A very positive impact of the tourism is that it is not only revenue generation, it is playing an important role in national and international understanding. At least आप कुरैशी से मिले, मेरे हाथ में AK-47 राइफल नहीं है. So this is tourism which is playing an important role to understand. हम एक दूसरे को जानते हैं, अपने resources को जानते हैं, अपनी country को जानते हैं. Not only national understanding but also international understanding. So you know Britishers ruled us, तो उन्होंने कहा कि सोने की चिड़िया, but the unfortunate thing is हम अभी भी नहीं समझे अपने देश को, अपने resources को. So my humble submission to all, we have very good researchers here. Professor Sandeep Walia was talking about the importance and relevance of research. We can't think of a very good tourist experience. We can't make the visit of a tourist at a destination memorable unless and until we don't know who is the tourist, why he is coming, what is the reason, वो कैसे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, what is his or her motive. And at the end of the day when he is leaving, let us take the feedback whether he is happy or not. So the research is very important, and in that concern, definitely there needs to be collaboration of industry and academia. We have people from industry, we have people from academia, and of course the students जो तंग आ गए हैं, चेहरे ही से पता चलता है, they have a very tough challenge ahead. The level of competition has increased manifold, and the whole world has become a global village now. तो इस global village में survive करने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इनोवेशन भी चाहिए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का अंदाज़ा हमें तब जाता है कि जब हम बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ का जितना भी मेन पावर है वो तो यहीं का है. दे आर, वन गेट्स प्लीज्ड टू नो, ये जो पायलट सुपरसोनिक प्लेन चलाता है ना, ही इज़ इंडियन. बट द थिंग इज़ हमने उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उसको कभी जगह नहीं दी. So there is a need of collaboration and cooperation between industry and academia. And once there is a close liaison with the industry and academia, then the advanced technology and innovation in tourism and hospitality can be fruitful. So with these words, my best wishes, all the best. I would like to introduce Dr. Jatashankar Tiwari sir. Here he is having immense experience in the field of hospitality and tourism. He is an author, he is Associate Professor, School of Tourism and Hospitality Services Management, IGNOU. I request sir to kindly share your valuable words with us. Thank you sir. इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नमन. मैं अपनी बात शुरू करूंगा, उससे पहले मैं अपना एक वाक़या जो मेरे साथ हुआ 2019 में, मैं उसके बारे में शुरू करके पर्यटन के बारे में भी बात करूंगा आपसे, नवाचार की बात भी करूंगा और तकनीक की बात भी करूंगा. 2019 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी बनारसीदास चांदीवाला, नई दिल्ली में. कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद हम सब लोग कॉन्फ्रेंस डिनर में मौजूद थे और वहाँ पे एक बाहर से प्रोफेसर आए थे. मुझे उनकी यूनिवर्सिटी का नाम तो याद है, बाकी और तो बहुत डिटेल याद नहीं है. पाउलो मोरा साहब इज़ वेल नोन. तो बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई पेपर प्रेजेंटर, कोई प्रेजेंटर या कोई बोलने वाला आपकी अपनी भाषा में बात करेगा, हिंदी में बात करेगा. मैं शायद सोच रहा था कोई करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं वहाँ पे. तो जब उनकी ये बात सुनी तो फिर मुझे जो है कई सारी चीज़ें याद आईं और मुझे अपनी कक्षा 12 में जो हमने गद्य गरिमा एक किताब चलती थी, उसमें एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक पार्ट था, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है. उसका एक दृश्य याद आया. एक
पैराग्राफ याद आया। उसमें एक जो है सज्जन तैयार होकर के उन्हें शादी बारात में जाना था, ऐसे माहौल भी आजकल शादी बारात का, तो अब उनके पास कपड़े लत्ते नहीं थे, उनके पास जूते नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने सबसे मांग करके व्यवस्था करके वो बाज़ार मतलब वो शादी में पहुँचे। और जब वो शादी में पहुँचे तो अब ऐसा होता है कि लोगों को पता ही चल जाता है कि ये उनका है नहीं किसी और का, तो कोई कहता है धोती तो फलाने की है, जूते किसी और के हैं, कुर्ता किसी और का है। तो सज्जन बोले जी हमारी घर की तो मुच्छे ही मुच्छे हैं। तो मतलब कहने का हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भाषा के क्षेत्र में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी ऐसी भाषा का अनुसरण करते हुए सिर्फ एक अंधी दौड़ में ना दौड़ जाएं। अगर मैं आप सभी से कहूं, विशेषकर अपने छात्रों से कहूं कि आप एक ऐसे किसी विषय पे जिस पे आपका ज्ञान थोड़ा कम है या बिल्कुल नहीं है, एक जो है आप पैराग्राफ अगर लिखना चाहें, तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग अंग्रेजी में बहुत बढ़िया लिख पाएंगे या हिंदी में। ये आपका अपना विषय हो सकता है, आपकी भाषा में अच्छा मतलब वो है तो आप किसी भाषा में अच्छा लिखें, और ज़्यादातर लोग जो है अपनी मातृभाषा में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। पर अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने जो है, अगर आप देखें कि हमारे यहाँ से लोग बाहर विदेशों में भी पढ़ने जाते हैं, रशिया है, जापान है, जर्मनी है। मुझे भी ये बात पता चली, बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ जाकर पहले आपको उनकी भाषा सीखनी है, उनकी भाषा में जब आप प्रवीण हो जाएंगे तभी आप अपने विषय में आगे अध्ययन कर पाएंगे, वरना आप वहाँ पे पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये जो हमारा एक भाषा का चैलेंज है, इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे वो पालोमुरा जी की बात भी याद आती है, तो मैंने उस दिन निश्चय किया कि अगर कहीं कुछ बोलना है, बात करनी है, तो मैं ज़रूर अपनी ही भाषा में बात करूँगा। पर्यटन की बात करें, हमारे पास अगर आप सभी लोग हैं, हमारे छात्रों को भी जानकारी है, पर्यटन की परिभाषा हमारे पास कहाँ से है, कहाँ की परिभाषा को हम कोट करते हैं अपने किसी भी लेख में और कहीं पे भी। क्या आपको पता है पर्यटन की उत्पत्ति की बात अगर हम करें तो ये हमारे वेदों से है? क्या है पता आपको? मैं आपको कुछ वेदों की कुछ ऋचा हैं, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जो वेदों में जो लिखे टेक्स्ट हैं उनको हम ऋचाएँ कहते हैं, मंत्र कहते हैं। जो आज की भाषा जो लौकिक संस्कृत है उसमें उनको श्लोक कहते हैं। एक बहुत ही मतलब जो है ऋग्वेद की ऋचा है, 10वें मंडल में है, मधुवाता ऋतायते मधुशरन्ति सिंधवः। ऐसे करके जो है बहुत सारी नेचुरल चीज़ों के बारे में हमारे ऋग्वेद में जिक्र है, और वो वैदिक टेक्स्ट है, इसलिए वो सामान्य अर्थों में तो उसमें चीज़ें नहीं हैं। मधुवाता ऋतायते मधुचरन्ति सिंधवः, इस पर हमारी 2 इंडस्ट्री बेस्ड हैं, हमारे हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट की 2 मेजर इंडस्ट्रीज़ पे बेस्ड हैं। क्या है कि बहुत सारे 22 से 24 चीज़ों को लेकर के उसमें कहा गया है कि मधुचरन्ति मतलब उसमें से मधु मतलब शहद निकलता है, और ये सामान्य भाषा में शहद ऐसा वाला शहद नहीं जो हम बाज़ार में डाबर का शहद खरीद के ले आते हैं। तो यहाँ मधु का मतलब है गुडनेस, अच्छी चीज़। जब हम बात करें मधु वाता ऋतायते, मतलब वाता ऋतायते मतलब ये जो हमारा वायु है, इससे हमें मधु का श्रवण होता है, इससे हमें मधु की प्राप्ति होती है। इस पर बेस जो है हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री है। सैनिटोरियम, आज से पहले जब हमारी जो पाश्चात्य जो है मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं थी, तब जब किसी को क्षय रोग या ऐसे कोई ऐसे रोग हो जाते थे जिनका क्योर नहीं हो पाता था, तब लोग जो है वो वहाँ पर जाते थे सैनिटोरियम में, जहाँ पर उनकी हवा, आबो हवा, कहते हैं दवा से ज़्यादा आबो हवा की ज़रूरत है बदलने की। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो दिल्ली की आबो हवा तो शायद रहने लायक नहीं है। तो अगर हमें इस तरह से कोई डिसऑर्डर या लाइफस्टाइल डिसीज रहती तो हमें ज़रूर से ज़रूर जाना पड़ेगा, सिर्फ दवाइयों से तो नहीं काम होगा। सो ये मेडिकल। सेकंड है मधुशरन्ति सिंधवः, मैं सिर्फ 2 की ही बात करूँगा, बाकी 24 की बात नहीं करूँगा, इतना समय भी नहीं है। दूसरी बात वो कहता है कि जो पानी है इससे भी मधु का श्रवण होता है, मतलब मधु निकलता है, गुडनेस है वाटर में। और इस पर बेस जो हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो है स्पा इंडस्ट्री। बहुत सारे रोगों के केयर के लिए आज भी सब लोग जाते हैं और वहाँ स्नान करते हैं। ये मैंने बात की पर्यटन की। अब जब आप निकलेंगे घर से बाहर, वहीं से आपका पर्यटन शुरू होगा। और उसका भी एक हरिश्चंद्र उपाख्यान में एक वर्णन है जिसमें 5 श्लोक हैं, जिसके अंत में चरैवेति चरैवेति आता है, जहाँ पे इंद्र भगवान रोहित जो कि पुत्र है हरिश्चंद्र जी का,
उसको जो है पर्यटन की प्रेरणा देते हुए ऐसे 5 श्लोक हैं। तो वहाँ से हमारा जो है पर्यटन का जो है शुरू होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कह पाना इतना मुश्किल है क्योंकि हम शायद अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। एक बार आदमी की पहचान मिटा दी जाए तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। आज सारी दुनिया में जो मार्केटिंग हो रही है, सब चीज़ें बेची जा रही हैं, वो इसलिए बेची जा रही हैं और आप खरीद रहे हैं क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, अपनी चीज़ों पे विश्वास नहीं है, आप अपने चीज़ को निम्नतर मानते हैं। इसलिए हम कोट पहन के खड़े हैं सिर्फ इसीलिए कि हम शायद अपने परिधान को निम्नतर समझते होंगे। मैं भी पहन के खड़ा हूँ। अब पर्यटन के बाद हम इनोवेशन की बात करें। इनोवेशन का मतलब है कि नवाचार। अपने आप में नाम स्पष्ट बताता है कि नए तरह का आचरण। जितनी भी तरक्की हमें करनी है वो हमें नवाचार से ही मिलेगी और नवाचार के लिए हमें कहीं से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए नवाचार किया और उसको रिकग्नाइज़ भी किया गया। हमारी जुगाड़ को अब इंटरनेशनली रिकग्निशन है, दैट इज़ नोन एज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ऑफ जुगाड़। जुगाड़ के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत है, नवाचार करने की ज़रूरत है। हर बार जो है बहुत नवाचार जो है आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि एकदम से आप जो है कोई स्पेस टेक्नोलॉजी ऐसे जैसे कुछ करेंगे। आपके रोज़मर्रा के काम में, नॉट ओनली इन योर खाली आपके हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म में, रोज़मर्रा के काम में आप उस पर अध्ययन करें जहाँ से आपको ईज़ हो जाए, आसानी हो जाए, आपका एफ़र्ट कम हो जाए। अगर ऐसी कोई चीज़ आप करते हैं, नवाचार कहलाएगी। बिना नवाचार, अभी जैसे सर ने बात की थी टूथपेस्ट की, हर बार ब्रांड में जब हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है साहब प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है। एक टाइम आता है प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लगता है। ये आप लोगों ने ज़रूर अभी पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद एक समय आता है जहाँ हमें उसमें कुछ नवीनीकरण करना होता है, नवाचार करना, तो कोई नई चीज़ जोड़नी होती है। जैसे टूथपेस्ट कोलगेट का ही आता था, फिर आया कि आपके पेस्ट में नमक है, फिर बाद में कहा कि साहब चारकोल जो है बहुत अच्छी बड़ी सफाई करता है, क्या आपके पेस्ट में चारकोल है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तकनीकी जो है यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मतांतर है। तकनीकी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन क्या तकनीकी वास्तव में हमारे लिए उतनी ही कारगर है, उतनी ज़रूरत है? इस सभागार में हम सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास सबके पास एक स्मार्टफोन ज़रूर होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम लोग उसका प्रयोग करते भी हैं। पर क्या आप जानते हैं इस पूरे कमरे में, इस पूरे हॉल में हम सब लोग एक ऐसी चीज़ से घिरे हुए हैं जो हमारे मनुष्य के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब आप ब्लूटूथ यूज करते हैं, जब आप ये संचार का जो उपकरण है हमारे पास, मोबाइल यूज करते हैं, आपके घर में टेलीविज़न यूज करते हैं, इवन इन बिल्डिंग्स में जो ये हमारे आयरन के बार्स पड़े हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल लाइनें हैं चारों तरफ, इन सब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। छोटे क्लास की साइंस की बात है, आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा होगा। इसके 2 वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक। ये दोनों चीज़ें निकलती हैं और ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर को इतना प्रभावित करती हैं कि आज के समय में बहुत से लोग स्ट्रेस से परेशान हैं। हो सकता है कि उनके और भी कारण हों, लेकिन ये जो चारों तरफ हमने अपने चारों तरफ एक जाल बना करके रखा, और हमेशा बना के रखा। जब आप एक मोबाइल फ़ोन अपने साथ लेकर चलते हैं अपनी जेब में रखकर, तो आपके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और इसका हमारे स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ता है ये हमें नहीं पता। हमारे मोबाइल उपकरण में भी लिखा होता है कि इसकी जो रेडिएशन वैल्यूज़ हैं कितनी हैं, पर जो हमारे मार्केटर हैं वो, उनका इनोवेशन है कि वो उस चीज़ पर साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमने अभी देखा कोविड के दौर में हमने टेक्नोलॉजी की बात करी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, लोगों ने पढ़ाया। क्योंकि हम तो मुक्त विश्वविद्यालय से हैं पिछले 12 साल से, इससे पहले मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में था, अब मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में हूँ, तो हमें तो टेक्नोलॉजी पर ही बेस होकर चलना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आज भी हमारा बच्चा, अगर हम उसको जो है अपना SLM नहीं देते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल,
उसको सिर्फ इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा सारा ज्ञान हम उसको दे देते हैं। बड़ा आसान है, हम भी कहते हैं कि हम एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और वो लेक्चर जो है बच्चा जब चाहेगा देख लेगा, पर थोड़ा सा अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखना है कि बच्चा कब देखता है और कितना देखता है वो लेक्चर, और उसके अलावा क्या देखता है अपने मोबाइल फ़ोन पे। तकनीकी और जो है नवाचार, मैं हमेशा जो है नवाचार का जो है साथ दूंगा, और नवाचार के लिए आप लोगों को भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इस नवाचार पर ज़रूर ध्यान दें। छोटी छोटी चीज़ों को आप चेंज करके, बदल करके, और नवाचार खाली पर्यटन में ही ज़रूरत नहीं है, नवाचार का तो प्रयोग आप एंटरप्रेन्योरशिप में किसी भी क्षेत्र में, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें। और आपसे ज़रूर आग्रह करूँगा, टेक्नोलॉजी हो सकता है कि थोड़ा सा आपके लिए घातक हो, आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है हम उसके बिना ना रह पाएँ। हालांकि मोबाइल फ़ोन के बिना आप रह सकते हैं। जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं था सब लोग सुखी थे, ऐसा नहीं था कि दुखी थे, इसके बिना रह सकते हैं। लेकिन नवाचार ज़रूर करें। टेक्नोलॉजी से हो सकता है ज़रूरतमंद, जितनी ज़रूरत आपको उतनी ही प्रयोग करें, दूरी भी रख सकते हैं, लेकिन नवाचार ज़रूर करें, नए विचार अपने मन में लाएं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। Things in this world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such word. I request Dr. Dhananjay Srivastav to thank all the dignitaries who have witnessed this conference. Thank you so much, sir, for being with us. Further, I extend my heartfelt gratitude to our guest of honor, Professor Lokus Misra, sir. Your presence, sir, has always motivated us. You accept our invitation. Thank you so much, sir, for being with us. In the series of vote of thanks, I extend my heartfulness, thankful to our Vice Chancellor. He has spent time with us, Dr. G.K. Thapliyal, sir, and our CEO, Madam, Dr. Sailya Raj, Madam, who also spent time with us. I am very thankful to both of you. I further devote my heartfelt gratitude to all the keynote speakers, Dr. Sandeep Walia, sir, Professor Rajiv Misra, sir, Dr. Riyaz Qureshi, sir, and all other keynote speakers who delivered their speech here. Further, I extend my heartfelt gratitude to all the dignitaries, academicians, and scholars who come here and make this event a successful one. I also extend my thankfulness to our lovely students who give their best effort to make this event successful and present here. At last but not the least, I thanks to all the teaching and non-teaching staff of the hotel department who also make their effort to make this event successful. Thanks to one and all. Thank you.